सो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। एंड आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं पाइथन ट्यूटोरियल। ये लेक्चर 0 होने जा रहा है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करेंगे अलॉन्ग विथ पाइथन इंस्टॉलेशन एंड हाउ यू कैन रन योर बेसिक पाइथन प्रोग्राम इन विजुअल स्टूडियो कोड, राइट? And then we'll be talking about some Python features in that particular video. Let's start this video and jump into my computer screen. तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम आपको अब बताएंगे कि कैसे आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में, और उसके बाद कैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करेंगे एंड देन पाइथन का एक्सटेंशन उसमें इंस्टॉल करके कैसे आप पाइथन का प्रोग्राम रन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। To install Python and Visual Studio Code, you have to open this website for install Python, python.org/downloads, and then आपको ये जस्ट इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये डाउनलोड होने लगेगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और to install Visual Studio Code, you have to just open this website code.visualstudio.com/download। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट you can just type here install Visual Studio Code and then you will be getting first website to that, and you have to just click over that, you will be getting the same website here, right? So इस तरीके से आप अपना according to your operating system, आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए एंड मैक ओएस के लिए अवेलेबल है विजुअल स्टूडियो कोड। एंड दैट योर कॉन्फ़िगरेशन you have to choose your configuration where it is 64 bit or 32 bit, right? And just you have to click over that and that will be installed in your computer. I'm not clicking that because I have already installed that. तो सिंपली डाउनलोड करने के बाद आपको आ जाना है अपने डाउनलोड्स फोल्डर में और वहाँ पे आपको डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड एंड पाइथन। वन बाय वन आपको डबल क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चूँकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है दोनों सॉफ्टवेयर, तो मैं यहाँ पर नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। सिंपली अब मैं आपको बताऊँगा कैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे और वहाँ पर पाइथन को रन करेंगे, पाइथन प्रोग्राम को रन करेंगे। ये आपको इंस्टॉल करने के बाद सीधे आ जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे और आपको जाना है अपने वर्किंग डायरेक्टरी पे। इन माय केस आई एम जस्ट यूजिंग डेस्कटॉप एज माय वर्किंग डायरेक्टरी एंड हियर आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन फोल्डर और वन डायरेक्टरी कॉल्ड ATS, and inside that ATS I'm just going to inside ATS and then I'm creating one more directory called Python tutorial, right? I'm just hitting enter, so it will be created. And if you want to open that Visual Studio Code inside this Python tutorial, you have to just write this command code space dot and enter. It will open Visual Studio Code right in your directory, selected directory. You can see that here it is selected, okay? So you have to just create your first Python file. There's nothing but test.py, right? And before writing the code, I would recommend you to just go to that extension folder and you have to install this Python extension, right? Since I have already installed in my Visual Studio Code, it is already installed as extension, but you have to just search here in your extension and you have to just install it. You will be getting install option here. You have to just install it and then you can write your first program here. Just I'm writing one message. This is Python tutorial by Anand, right? एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पाइथन में आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स, पेयर ऑफ सिंगल कोट्स, पेयर ऑफ डबल कोट्स, पेयर ऑफ ट्रिपल कोट्स भी रख सकते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट यूजिंग डबल कोट्स as you must have habituated with this, and I'm just printing this variable MSG
In Python you can see that this is very simple. You do not need to import anything. Like in C, C++, you have to import stdio.h, conio.h, right? तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना है, आपको जस्ट पाइथन फाइल क्रिएट करना है. डायरेक्टली यू कैन राइट योर प्रिंट स्टेटमेंट एंड इट विल जस्ट वर्क, राइट. One more thing I will tell you, I'm just closing this one. One more thing I can tell you, you can just open the terminal, since we are going to see our output on terminal itself. Okay, so it's open now, and to run this Python file you have to just right click on that file and run Python file in terminal. You have to just click on that, and then I think it's taking time for the first time. So yeah, you can see this one. So this is Python tutorial by Anand. It's printed. So one more thing I will tell you about Python is dynamically typed language. What does it mean? So you do not need to declare any type of any variable in Python. मतलब आपको कोई भी वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर नहीं करना है. आपको बस आप वेरिएबल का नाम लिखिए और उसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं at any point. For example, for in this example, I have a string in this message variable. Now I can assign 1, 2, 3, 4, 5 integer, and it will not throw any error, right? You can see I'm just writing and just trying to execute it. So it's executing 1, 2, 3, 4, 5. You can see the output, right? One more thing I will tell you, we can debug our Python program by clicking here. You have to just click here, right? And you have to select this one, run and debug, and click over that. You have to select Python file, and it's debugging started. Now you can see wherever you have put that breakpoint, okay, you have to simply just click on that line where you want to put the breakpoint. The execution stopped there, and it will tell you like it's a debugging skill. It's like that you can debug your Python program, like up to this what is the value of this particular MSG variable. Simply you can see here, you can call stack, you can actually in watch, you can actually do that. You have to write your variable name here, just hit enter, and then it will show you what value it is in that particular variables. So like that you can debug your Python program. Okay, here you can get couple of options. This is to continue this one, okay, so it will continue to the end of the program, and finally it is printing the output, right? और बहुत सारे ऑप्शंस भी वहाँ पे थे, मतलब नेक्स्ट लाइन को जंप करना, फिर एग्जिट करना, फिर यदि आप ब्रेक पॉइंट को स्टॉप करना चाहते हो, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे वहाँ पे थे. ठीक है, तो इस तरह से आप पाइथन प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं. तो आज के लिए इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही. आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा. यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इंस्टॉल करने में पाइथन को, या विजुअल स्टूडियो कोड को, या विजुअल स्टूडियो कोड में किसी प्रकार के प्रोग्राम को रन करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में. आई रेगुलरली यूज टू चेक योर कमेंट्स, राइट, एंड आई विल आंसर यू देयर एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ. एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप, ये ज़रूरी नहीं कि विजुअल स्टूडियो कोड ही इंस्टॉल करें, आप पाइचार्म, राइट, भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या अदर एडिट, बहुत सारे कोड एडिटर अवेलेबल हैं, यू कैन डू दैट. ओके, so if you find this video useful, then please like, comment and share with your friend as well, and subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.